through the mobile wallet and an inbuilt QR code scanner. So every Pakistani PTA, Faisal Saab, distinguished guests, thank you very much for taking the time out. आयशा आपने बिल्कुल सही कहा है, ख्वाब पूरा पता नहीं होने लगा है कि नहीं, लेकिन ख्वाब के करीब आ रहे हैं हमारी सबसे Sebastian, I'm sorry, we will translate, but there's a huge audience that perhaps would like me to say a few words in Urdu also. Actually एक दफ़ा आखिरी कोई ट्वीट की थी तो लोग पूछते हैं कि जी आप इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, जब ये रेलेवेंस बड़ी ज़रूरी है। इंटरनेट में सबसे पहली जो चीज़ है, अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है तो इंटरनेट हमारा बैकबोन बनेगा। उसके लिए तीन चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी ये थी जब 2014 में पीटीए ने 3G और 4G लाइसेंसेस किए, कंपनीज आई, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक्सेसिबिलिटी हो गई है, जो हमने रोड बनानी थी या जो हाईवे बनाना था वो बनना शुरू हो गया। फिर आती है अवेलेबिलिटी, जिसमें रेलेवेंस भी आती है, और आपने ये इस तरह देखा है कि हम सिर्फ वो चीज़ें शुरू में डालना चाहते हैं जो कि हमारी आम आवाम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होंगी। वी आर नॉट थ्रोइंग इन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस डालना चाह रहे हैं, और बाद में भी ऐसी एप्लीकेशंस डालेंगे जिसमें हो सकता है सिटीजन पोर्टल आए, डॉक्टर की कोई सर्विसेज हों, आपने प्राइसेस चेक करनी है, एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, आप प्राइसेस चेक कर सकते हैं, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया या यूट्यूब देखना आसान टाइप की चीज़ होती है तो लोग देख सकते हैं। लेकिन जो बैरियर हमने बाद में देखा है वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी का। और वाइल ऑन वन हैंड मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेट और वॉइस की जो कीमतें हैं वो दुनिया में तकरीबन सबसे सस्ती हैं, नॉट नेसेसरली द चीपेस्ट, बट अमंग्स द 5 cheapest countries in the world, which are offering the lowest prices when it comes to internet usage and voice minutes. लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है अफोर्डेबिलिटी का वो होता है हैंडसेट, और हैंडसेट अनफॉर्चुनेटली हमारे महंगे तरीन हैं। सो जो चैलेंज था, और बहुत अरसे से मैं हुकूमत के साथ भी काम कर रहा हूँ, चेयरमैन पीटीए साहब के साथ भी काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री के साथ भी काम कर रहा हूँ, एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, हम सारों का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह हम स्मार्टफोन को अफोर्डेबल कर सकें। और वो ट्रेडिशनल स्मार्टफोन, मैं गैलेक्सीज़ की बात नहीं कर रहा, आईफोन्स की बात नहीं कर रहा, जो कि ऑलरेडी $800-700 का फ़ोन है और वो थोड़ा सा और सस्ता करें, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बेशक आप टैक्स भी करें। जो आम आवाम है, जो करीम का ड्राइवर है जिसने फूड पैंडा में खाना डिलीवर करना है, उन लोगों के लिए एंट्री बैरियर बढ़ रहा है। ये रोज़गार वाले लोग हैं, ये अगर 15,000 रुपये का फ़ोन करेंगे तो उनकी कीमत जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर देगा। सो अगेन आई रिपीट, पाकिस्तान को अगर अपने आगे बढ़ाना था तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हर इंडस्ट्री में, चाहे वो एग्री टेक होएगी, जिसको एग्री टेक कहते हैं, एग्रीकल्चर का भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन का भी जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल का, सो हर चीज़ बिकम्स एड टेक और एड टेक और some other form of tech, fintech. The challenge before us has been to provide a phone. That has been the missing link. What we are doing today is a bold step, and I was just asked by Dr. Nishtar whether others will do it or not. And I hope that my competition actually looks at this example and they also follow us over here. Because this particular thing we're not doing for jazz. This particular initiative is for Pakistan. अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो इंटरनेट और अफोर्डेबल फ़ोन्स के ऊपर काम करना है। I wouldn't take more time. I want to have Dr. Nishtar join us in a few minutes. But when I was going over some of the details of the ESAS program, I was quite refreshed कि हमारे objectives कितने well aligned हैं। उनका एक प्रोग्राम है जिसमें कहते हैं कि a bank account for every woman, right? I love that thing, क्योंकि अगर हमने अगेन मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमने अपनी ख़वातीन को आगे लेके जाना है, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ानी है। जैज़ कैश जैसी एप्लीकेशंस के थ्रू वो एप्लीकेशन बढ़ती है। BISP is already providing support for 5.7 or 6 million women in Pakistan. How do we actually also give them, equip them with the phone so it's not just a one-off thing, but an opportunity for them to continue generating income for themselves? So लोन डिस्पर्सल्स के ऊपर बात है, हेल्थ के ऊपर आपने एजुकेशन और हेल्थ की बात की है, ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वन वे और द अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, we can be a partner in this thing, and we would love to be a partner because I think our objectives are clearly aligned towards a better Pakistan, a more prosperous Pakistan, a digital Pakistan, and we are delighted that we are playing our humble contribution in this journey. So thank you very much for joining us today. Please spread the word. This is a great product and I hope that our future customers do like it. Dr. Sahab, अगर आप माइंड ना करें कुछ आके आप भी थोड़ा से अल्फाज, thank you very much.
Thank you so much, Amir. I like the fact that we've said this is not just a jazz product, it's a product for the whole industry, and we need more. And a very good afternoon. सबसे पहले थोड़ी उर्दू में बात, with apologies to Sebastian and others who may be in the room. आजकल मैं तैयारी कर रही हूँ एहसास प्रोग्राम के एक सब प्रोग्राम की, जिसका नाम किफ़ालत है, जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान इनिशियली 70 लाख ख़वातीन को बैंक अकाउंट्स, एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स और माहाना 2000 रुपए देगी। और उस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में मैं अक्सर फील्ड में जाती हूँ। पिछले फ्राइडे मैं चुआ सैदन शाह गई थी और तलागंग गई थी, और वहाँ पे रास्ते में जो जो बस्तियाँ आती गईं मैं वहाँ रुकती गई, क्योंकि मैं ये पता करना चाहती थी कि वहाँ जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन रहती हैं, वो हुकूमत के मैसेजेस को किस तरह से सुनती हैं। क्या वो रेडियो सुनती हैं, क्या वो टीवी सुनती हैं, क्या वो किस लैंग्वेज में, ज़ुबान में सुनती हैं, वो क्या सुनना चाहती हैं। तो मैं बहुत सी बस्तियों में गई और मैं 2 का जिक्र आपके सामने करना चाहती हूँ। एक ऐसी बस्ती, छोटा सा मेरे ख्याल से 4-5 झुग्गियों पे मुश्तमिल वो विलेज था, और वहाँ के जो मर्द हजरात थे उन्होंने पैसे पूल करके ट्रैक्टर ख़रीदा हुआ था, क्योंकि वो जो सीमेंट फैक्ट्री साथ की थी उसमें वो मिट्टी ले जाते थे, और उनकी ख़वातीन सारे दिन घर में रहती थी। ना उनके घर में टीवी था, ना उनके घर में रेडियो था, ना उन ख़वातीन ने टीवी कभी देखा था, मगर उनके घर के मर्द के पास एक फ़ोन था जिसका स्क्रीन टूटा हुआ था, मगर वो तमाम ख़वातीन उस फ़ोन से सब कुछ एंटरटेनमेंट उनकी वो फ़ोन थी। That telephone in that remote village which I'm talking about, in one of the remotest parts of the country, was actually the connection of very marginalized women to the rest of the world. And then I continued to see that. I'm actually narrating the story when I went into the field to get a better sense of how women listen to government's messages and how do they entertain themselves. And the more I go into the field, the more I get to know that it is through the cell phone that they establish their connection with the world. The cell phones are really transformative, and I don't need to reiterate this in front of an audience which is more well informed than I am. I can only tell you that there was a time when we used to think that the availability of clean water, the availability of appropriate sanitation, good health and education indicators were the indicator of development in a society, were the indicator of progress in a particular unit. But today things have changed. It is the availability of the cell phone signal and broadband connectivity which defines what development is and how progress needs to be defined. And that's a huge paradigm change. My own learning journey of the potential of technology and telecommunication technology in particular to transform the world began back in 2013, when I was asked in an interim government to lead many ministries for a duration of time, and the Ministry of Telecom, IT and Telecom was one of them. And it was then I realized that the most cross-cutting potential across health, across education, across science, across women's empowerment, across the youth's agenda, across government's governance effectiveness actually lies within this space. So this is how transformative it is. And when you talk about the transformative potential of technology, and particularly telecommunication technology, you're talking about 3 things. You're talking about broadband connectivity, you're talking about content that is relevant to people, and then you're talking about handsets. And across our entire planning within the domain of SARS, when I engaged with constituents in this space, I realized that it was not connectivity, because thanks to the investment of our government and the Universal Service Fund, we are quite further along in providing connectivity.
It is not content, because we have a lot of entrepreneurial startups providing very innovative, locally relevant content, but it is the cost of the cell phone which is extremely prohibitive, and that is what we need to wrap our arms around. So this is a very long-winded way of saying how pleased I am to be here. It's a very long-winded way of signaling my intent on behalf of ESAS, on behalf of the government, to explore avenues to further this agenda in the country. Telecommunication technology and poverty have a very direct linkage. On the one hand, it fuels economic growth, and that, of course, creates jobs. Number two, it provides access to information, which is very empowering in its own right. And then, of course, it opens this huge Pandora of services, many of which you talked about. So let me tell you a little bit about ESAS and how it envisages interplaying with this dynamic. Many of you may not know that ESAS is the government of Pakistan's new poverty alleviation program. ESAS is multisectoral and it is intersectoral. It is not just the government and the Poverty Alleviation Ministry, but it is 34 ministries across the government, and it is also layers and layers of private sector who are helping us execute this program. In the construct of ESAS, we were very conscious that technology, particularly cell phones, and the role of the private sector has to be very salient, and therefore it was embedded in many different programs. The first of those was Kifalat, which the Prime Minister is going to be launching on the 31st of January. Kifalat is the government's financial and digital inclusion program for at least 7 million women, and the number can go up to 10 million. Through this program, we provide women not just stipends, but we also provide them bank accounts and access to mobile phones, and will ensure that they have access to livelihood opportunities through private sector participation in a variety of innovative ways. Secondly, under ESAS, we are developing the rural value chain development policy, where we will provide the private sector, where we will give them fiscal incentives to invest in local industry, because Pakistan is very productive from an agriculture standpoint, but that productivity has not been tapped optimally because value chains have not been created systematically. And we hope that the 7 million women that we will empower with access to cell phones and access to bank accounts will be able to interplay and plug and play in the value chain created environment a lot in a more astute manner. Then, of course, the ESAS has launched a number of challenges, and those challenges which are currently in the pipeline center on getting the best solution for an online microcredit facility, getting the best solution for online digital education content for K-12 and above, getting the best solution for a platform for microcredit wage development, and there are a suite of other challenges that we have competitively launched, and we're currently in the process of turning them around. And all these would have been futile if we had not worked concomitantly on the connectivity piece, on the content piece, and on the handset piece. And of course, the handset piece is furthered by partners like yourselves. There are a number of different initiatives under ESAS where cell phones and the digital space interplays. For example, we've recently signed an MOU with, in fact, not a memorandum, but an agreement of action with Facebook, who are giving us advertising space and special privileges, particularly with reference to their free basics content. Also, some of the new social protection programs that we are launching, in particular the demand-driven Tahaffuz platform, is totally powered by SMS messages in cell phones. So the importance of cell phones cross-cuts across the program. It also cross-cuts across some of the other private sector initiatives which we will be launching very soon. For example, in collaboration with a commercial bank, we have designed a product to digitize wages of the informal sector workers across different industrial establishments in the private sector,
and in some of the large public sector corporations. And the potential to join the dots and get actors like you involved to expand that from just a financial inclusion to also a digital inclusion program is exponential, and we will continue to further those conversations. So I just want to end by saying that on behalf of the government and on behalf of some of my senior colleagues who are present here today, we really welcome this initiative, which is centered on providing financial access to smartphones. The government can interplay in this initiative through a variety of different policy levers to facilitate the further coming down of the price and to ensuring that other market players come forward with similar products so we can make this product pervasive. The objective is, as you very eloquently described, to make sure that this really becomes the smartphone of Pakistan, and it is actually in the hands of every citizen, because that's going to open up a lot of space to them. So thank you once again for asking me to be with you at this very exciting moment, and on behalf of the government, I commit that we look forward to working with you. Thank you very much. I also please request Chairman PTI Major General and ladies and gentlemen, members of the government, the CEOs who've partnered with us. Thank you very much. Just one more minute and then we'll... आज हमने भी बताया था कि मेन जो इशू आता है आम आवाम को वो अफोर्डेबिलिटी के लिए आता है. तो अगर अफोर्डेबिलिटी हमने बेहतर करनी है तो टैक्सेस कम करने पड़ेंगे. उसके दो तरीके हैं, या तो ये कि पाकिस्तान में सस्ते फ़ोन बनाए जाएं या बाहर से सस्ते फ़ोन लेके आएँ. लेकिन जो मेन चैलेंज जो है पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड अपटेक के लिए वो ये है कि लोग जब पहला एंट्री बैरियर देखते हैं तो फ़ोन बहुत महंगा होता है. तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन अभी मिली है, लेकिन मेरा ख्याल है मज़ीद की गुंजाइश है. जी वो हम हुकूमत के साथ हम काम कर रहे हैं, बट टैक्स थोड़ा सा कम हो गया है. जी जी देखिए ज़ैनी कोफ्त जो है वो मजबूरन है, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमने कोशिश करनी है कि जो स्मगल्ड फ़ोन्स हैं वो बंद होएं, ग्रे से जो फ़ोन आते हैं वो बंद होएं. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फ़ोन उस किस्म का है, लेकिन यह है कि हमें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा फ़ोन्स को रजिस्टर करने के लिए. ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और उसको मैं फुली सपोर्ट करता हूँ. जो चैलेंज है वो ये है कि हमने सस्ते करने हैं, लेकिन ये बहुत हमारे मुल्क के अंदर गलत किस्म के गलत चैनल से फ़ोन आए थे और उनमें से कार्रवाई हो सकती है, बाकी हादसात हो सकते हैं, और उनको रजिस्टर करना बड़ा लाजमी था. ये बताइए कि टैक्स जो मोबाइल कार्ड बैलेंस कार्ड जो टैक्स है, मोबाइल कार्ड जो टैक्स है जो पिछले साल तकरीबन 3 से 4 महीना सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करके रखा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 10 रुपये टैक्स कटता रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो इंटरनेशनल रूल है उसके तहत वहाँ पे टैक्स कलेक्शन आना है, लेकिन अभी भी वहाँ पे सिवाय इस काम के बाकी सारे मोबाइल कंपनियाँ वहाँ पे टैक्स कटौती करती हैं. क्या कहेंगे? देखिए आई हैव टू लुक इनटू इट. गिलगित बल्तिस्तान की लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो फ़र्क है. पीटीए उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, लेकिन मेरे पास इसका तफसीली जवाब नहीं है. आई विल लुक इनटू इट कि क्यों उधर कट रहा है या नहीं कट रहा है. इसको हम आईटी कमेटी भी देख रही है इसको, और ये कमाल आज जैस ने जो लॉन्च किया ये कमाल क्या है, क्योंकि हमारा भी जो हुकूमत का पूरा फोकस है कि नीचे जो पिसा हुआ तबका पाकिस्तान का उनको एम्पावर करें, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ ऐसे इनिशिएटिव जिस तरह से डिटेल में सारिया निश्चित साहिबा ने आपको बताया कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, बहुत से होने वाले हैं. एक कफालत कार्ड है 31 को लॉन्च हो रहा है. तो ये जो 4 है ये तो कमाल एक चीज़ जास लेके आया कि 4G है, और इसमें जो 2 महीने का कमाल चीज़ ये 2 महीने के लिए जो डॉक्टर फ्री है वो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. और आप देखेंगे कि इससे हमारी जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगी और लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर सकेंगे घर बैठे इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को,
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक प्रोडक्ट जो है इकोनॉमिकल प्रोडक्ट जो है वो जैज़ लेके, हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ जैज़ एंड डिजिट जिन्होंने ये लॉन्च किया है, और ये इंतहाई ज़रूरत भी थी। और मैं तो अभी जाके खैर ब्लू एरिया से मिल जाएगा, मैं तो ख़रीदता हूँ एक। आमिर साहब, सवाल ये है कि हुकूमतों ने मुख्तलिफ इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको बड़े रिबेट दिए। वो इंडस्ट्रीज वो परफॉर्म नहीं कर सकी। ये IT टेलीकॉम वायर्स इंडस्ट्री है जिसने परफॉर्म किया है। क्या इस गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई इसमें रिबेट देने के लिए कोई प्रोग्राम मुरतब किया है? गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आपके पास? देखें, एज सच हमें कोई रिबेट की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह काफ़ी एक हेल्दी एक इन्वायरमेंट है, हमारा बड़ा एजुकेटेड रेगुलेटर है। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी है कि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मली चलती हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमारी डिसएग्रीमेंट भी होती हैं, लेकिन एज सच जिस तरह आपने भी बताया कि ये इंडस्ट्री सही चल रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंटल पॉलिसी और इंटरवेंशन ऐसी लेके आएँ कि ख़ास तौर पे जो आज भी जो बात हुई है, जो आम आवाम वाला जो तबका है जो अभी तक महरूम है। पाकिस्तान में 160 मिलियन लोगों ने सिम इस्तेमाल कर लिया, लेकिन 60 मिलियन अभी भी हैं जिनके पास नहीं है। आज भी 40 मिलियन ऐसी आवाम है जिधर सिग्नल नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें एक ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर, बोथ एज अ कंट्री गवर्नमेंट और एज़ प्राइवेट ऑपरेटर्स, कि जब तक आखिरी बंदे तक सिग्नल नहीं आता हम लोग सक्सेसफुल नहीं हैं। तो उसमें जो मदद हुकूमत से हमें मिल सकती है, हम उसके लिए ज़रूर उनके पास जाते हैं। अच्छा, हम दो और क्वेश्चन देंगे। आपने पूछते हैं 40% लोगों के पास सिग्नल का इशू, तो क्या नेशनल रोमिंग पे कोई बात हो रही है? देखें, ये वो ऐसी जगह है जिधर कोई सिग्नल नहीं आता। नेशनल रोमिंग को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन USF जिसने बहुत सारी सक्सेस दिखाई है अभी भी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन छोटे मौज़ों में रहती है और वो नोमैडिक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो अभी भी पाकिस्तान में 82-83% आबादी है जो कि टेलीकॉम टावर के नीचे आती है, बाकी 17% जो है वो अभी तक नहीं आती। तो USF के थ्रू उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं अगर आपको ये बात बताऊं, ये जो हमने सर्विस लॉन्च की है ये पैसा बनाने के लिए नहीं की। ठीक है, पाकिस्तान में हमारी जो काविश है, एक लीडर जो होता है उसकी ज़िम्मेदारियां और एक बिज़नेस की ज़िम्मेदारी भी होती है, वो अपनी बिज़नेस से ज़्यादा होती है। जिस तरह इंसान की वैल्यूज़ होती हैं, बिज़नेस की भी वैल्यूज़ होती हैं। हमारी वैल्यू ये है कि यार हमने किसी को कहते हैं ना, लीव नो वन बिहाइंड। हम लोग तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक सारा पाकिस्तान इंटरनेट के ऊपर नहीं आएगा। ये चीज़ जो है, ये वाला ख़ास तौर पे ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये पैसा बनाने के लिए नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ बाकी लोगों को करने जा रहे हैं ताकि वो इंटरनेट का देख सकें और उनको फ़ायदा नज़र आए। और फिर हम जाके हुकूमत के साथ काम करेंगे, चाहे वो एहसास प्रोग्राम है या बाकी इनिशिएटिव्स हैं, कि वो मैंडेट करें कि हर ऑपरेटर जो है कम से कम साल में 10 लाख फ़ोन इस कीमत के ऊपर दें। चारे ऑपरेटर्स को आप कहें, और हम रिलीफ कहीं और ले लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस वक्त एंट्री बैरियर इतना बड़ा है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है। वो डिवाइड हर जगह बढ़ रहा है, अमीर अमीर तरफ होता जा रहा है, गरीब गरीब तरफ होता जा रहा है, और जो बंदा आज इंटरनेट से महरूम है वो मज़ीद गरीब होता जाएगा। सॉरी, ये टैक्स हम दे रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी दे रहे हैं, इस कीमत में बिल्ट इन है। आप मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्मार्टफोन हर एक का हक है, लेकिन जब तक ब्रॉडबैंड और फिर रोमिंग पॉलिसी जो है, नेशनल रोमिंग पॉलिसी, वो नहीं होगी तो जैज़ के जो सिग्नल है जी वो रूरल एरिया में तो कहीं पे भी बहुत, खास करके जो शुमाली जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। अब एक चीज़ आप लेके आए, ये स्मार्टफोन शेयर में तो यूज़ होता है, उसके लिए क्या करें? जी, सो देखें, रूरल एरिया सिर्फ शुमाली इलाकों में नहीं है, पंजाब में भी बहुत हैं, साउथ में भी बहुत हैं। हमें अपनी कमज़ोरियाँ अच्छी तरह उनसे हम आगाह हैं। हम नेशनल रोमिंग के ऊपर भी काम करेंगे और हम अपना कवरेज भी बढ़ा रहे हैं। सो एज एन ऑपरेटर मैं आपको अपनी बात कर सकता हूँ कि जैज़ का 4G जो सिग्नल है, ना सिर्फ स्पीड सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा 4G कस्टमर्स भी जैज़ के पास हैं। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में डेफिनेटली हमारी वीकनेस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। Would you like to comment on underserved areas? Can you take a question from her? Actually, सॉरी फैसल साहब, आपने पूछ लिया, आप जरा पूछ लेंगे? अनफॉर्चुनेटली जैज़ का सिग्नल ज़रूरी है अगर जैज़ की सिम है तो, लेकिन ऐसे बहुत कम जगह हैं जिधर जैज़ का सिग्नल नहीं आता। नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ मसले हैं, लेकिन जैज़ का सिग्नल आना मस्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैज़ का सिग्नल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर 4G नहीं होगा तो ये 3G पे भी चलेगा और 2G पे भी चलेगा। तो अगर सिग्नल है, चाहे 2G है, 3G है, 4G है, फ़ोन आपका काम करेगा।
पैसे कमाने के लिए नहीं है। नहीं है, उनके लिए नहीं है। मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी टैरिफ्स और जितने भी चार्जेस होते हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर रेगुलेटर आपके पास ज़रूर मौजूद। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि कौन से हिडन चार्ज की आप बात कर रहे हैं। शुरू में टैक्स कटता है, विद होल्डिंग टैक्स कटता है और जीएसटी कटता है, वो हुकूमत लेती है। उसके बाद आपके रेट्स हैं, तो उसमें कोई ऐसी चार्ज नहीं है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का मालूम है तो आप मुझे बताइएगा। आप ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। ट्रायल किया है, जब हुकूमत पॉलिसी बनाएगी उसके बाद फिर देखा जाएगा। थैंक यू जी।